and I made you read the difference between statutory and non-statutory. We discussed some case study also. Yesterday there was one wrong answer in the case study. My bad. I didn't read the question properly when we were talking about Goreti and वो question था नहीं. Now see, Ali वाला question पढ़ना दोबारा से क्या था? Question number 3. Ali has listened in one of the class that audit covers all the aspects of an entity. That we all know. Ki audit covers all the aspects of an entity. But he concluded wrong thing. What he concluded? Read. Each and every transaction of the entity is verified by the auditor. At half of the point he is right. Ki audit covers all the aspects of the entity, but the remaining half is what? Wrong. Auditor never does the each and every transaction verification. He does with technique sampling. So who is wrong here? The Ali is wrong. Partially wrong or not? But who agreed with Ali? Goreti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it also meant that audit should be organized to cover all the areas of an entity. Goreti is right actually, but she is agreeing with the right person or wrong person. So दोनों ही wrong हुए ना. तो answer is D. I think by mistake yesterday we called it at C. Answer is D. Views of both Ali and Goreti are what? Incorrect. समझ में आ गया? चलो next topic. This is was the one thing I wanted to tell. Let's start with the next topic. Now elements. I think I already told you yesterday what is the difference between audit engagement and assurance engagement. Please tell me. Where do we give a reasonable assurance in terms of high level? And where do we give the reasonable assurance in terms of lower level? Assurance में क्यों lower level होती है? क्योंकि assurance is on which areas? Future areas or present areas? Future is certain or uncertain? Is it projections and forecast or not? That's why we can't give you the high level of assurance. We'll only give you the lower level of assurance, right? And one more thing, what are the differences? I think before leaving, I told you that I will explain you all these points again and again. Can you start reading it from the point number 1? What do you mean by assurance engagement? It means an engagement in which, what is the difference number 1? Practitioner. We will not call you as a person called what? हम लोग आपको क्या बोलेंगे? प्रैक्टिशनर. तो कभी भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का असाइनमेंट आया या रिव्यू असाइनमेंट आया या रिलेटेड सर्विसेज असाइनमेंट आया, एनीथिंग अदर देन ऑडिट असाइनमेंट में you will not call yourself as an auditor, you will call yourself as a practitioner. Answer will remain same. I am still saying that you are a qualified practicing CA. Your designation changes. What changes? Designation. Audit के केस में you are called auditor. Other than audit के केस में practitioner. Point number 1 समझ में आया? Now auditor expresses what? Conclusion or expresses opinion? Practitioner expresses what? Conclusion. So बताओ, what are the two differences you found between audit and assurance? Instead of auditor, you will call yourself as a second thing. Instead of opinion, you will call it as a designed to enhance the degree of confidence of which user? Intended. Generally, I told you that intended user यहाँ पे हमारे होते हैं bankers, क्योंकि we generally do the assurance engagements on what? Loans and project reports and all. तो who is our intended user? Banker. देखो banker भी simple. He can simply ask Mukesh Ambani to give me the financials, and if the Mukesh Ambani will sign those financials, that is enough for banker. But banker क्या बोल रहा है? मुकेश अंबानी के साथ अगर एक qualified practicing CA also will sign the which report? Project report. Then it will be less enhancement or more enhancement. So that's why our signature, our conclusion gives the more confidence to the intended users, other than the which party? Responsible party. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि responsible party कौन होती है. When we talk about our auditing profession, हम management को बोलते हैं the one who prepares the financial statement. Auditor is the one who examines the financial statement. दोनों में difference समझ में आया? In assurance engagement, management is known as which party? Responsible party. अब ध्यान से सुनो. Let's say for example, there is one A Limited which appointed me to prepare their which report? Project report, which they want to give it to the person called what? SBI. So who is looking for a loan? A Limited. Approached whom? Me. To prepare their which report? So that we can go to whom?
SBI and take a loan. Is it clear to all of you? अब यहां पे ध्यान से पढ़ना हुआ क्या, यहां पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई विल प्रिपेयर, trying to understand, project report I will prepare, but who is giving me the data and information? So who is the responsible party? A Limited is known as which party? Responsible party. Who prepared it? Auditor. So who is the practitioner? Auditor. यहां पे मैं हो गया practitioner, हो गया रोहित सर इज व्हाट practitioner. और मेरे को ये बताओ, ये रिपोर्ट जाएगी किसके हाथ में? तो who is our intended user? तो ये कौन हो गया अपना इंटेंडेड यूजर. आप समझ में आया? तो हु इज गिविंग द इंफॉर्मेशन? मैनेजमेंट. तो वी विल कॉल इट एज अ व्हिच पार्टी? रेस्पॉन्सिबल पार्टी. टू होम वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन? एसबीआई. तो एसबीआई इज अ व्हिच यूजर? इंटेंडेड यूजर. हु इज प्रिपेयरिंग इट? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट? प्रैक्टिशनर. आप समझ में आ रहा है वर्ड टू वर्ड? अब ये पूरा सेंटेंस दोबारा से पढ़ो एंड प्लीज टेल मी यू अंडरस्टूड इट. Read the whole sentence again. Assurance engagement means an engagement in which practitioner expresses what? Conclusion designed to enhance the degree of confidence of whom? Intended users other than what? हमें मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज करना है. We have to increase the confidence of whom? SBI. Am I correct or no? Other than which party? Responsible party. About what? Outcome of evaluation. Did I evaluate the future figures of my client or not? Yes. Or measurement of which matter? Subject matter against what? Criteria. अब मैं तुम्हें बताता हूं what do you mean by the word called subject matter? What do you mean by the word called criteria? Problem is that when you start reading these words in your study material, you will not get the meaning of these words very easily. आपको sentence framing में time लगेगा. That's why I chose कि let's say for example first chapter अपन यहां से पढ़ लेते हैं. So that you will get an idea, because these words are going to be repeated again and again in the various chapters. So it will be easy for you. Now, subject matter का मतलब क्या होता है? Let's say for example, SBI clearly written in its loan agreement कि boss, if every year you will show me 30% increase in profit, then only loan will approve. If in the last 5 years you will show me that you have grown by how much percentage? तो I will approve your loan for the next 10 years. That is what whose condition? SBI's condition. अब ये जो SBI ने रख दिया कंडीशन, इसे हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया. What do we call it as? अब now when I checked the last 5 years का performance of what? A Limited, तो I found out that कि last year में did 35%, before that they did 25%, before that it was 20%, then 15%, and then what? 10%. अब मेरे को ये बताओ, every year they are growing by 30% or sometimes more than 30%, sometimes less than. इसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर. व्हाट डू वी कॉल इट एज? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी? सब्जेक्ट मैटर. स्टैंडर्ड बजटेड परफॉर्मेंस को क्या हो गया? क्राइटेरिया. अब मेरे को ये बताओ, बजट माइनस एक्चुअल्स क्या होता है? बजट माइनस एक्चुअल. सपोज तुम्हारी मैरिज का बजट था 20 lakhs, एक्चुअल हो गया 30 lakhs. तो बजट था 20 lakhs माइनस व्हाट? 30 lakhs. ओवर एक्सपेंडिचर और अंडर एक्सपेंडिचर? ओवर एक्सपेंडिचर. तो बजट माइनस एक्चुअल्स वी कॉल इट एज वेरिएंस. व्हाट डू वी कॉल इट एज? यहां पे भी वही हो रहा है. यहां पे मेरा बजट क्या है? विच इज सेट बाय द होम बैंक. बैंक ने क्या बोला? कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ व्हाट? 30%. But whether the company was increasing by consistent or inconsistent, तो ये हो गया क्राइटेरिया 30% और ये हो गया सब्जेक्ट मैटर. डिड यू गेट द पॉइंट? अब इन दोनों को कौन कंपेयर करेगा? बैंक. कि माई क्राइटेरिया इज 30%, बट योर सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट? समटाइम्स 10, समटाइम्स 15, समटाइम्स 20, 25 एंड 35. तो बॉस, इट इज मैचिंग और मिसमैचिंग. योर लोन एप्लीकेशन विल बी व्हाट? रिजेक्टेड. लेकिन अगर इन द लास्ट 5 years इट इज ऑलवेज मोर देन 30%, now tell me, is it within the expectation or not, or rather more than expectation or not? Then your loan application will be what? Accepted. अब समझ में आया? This is what we mean by the set of words which you needed to understand. अब now again requesting you read the whole sentence carefully, first 4 lines. What is assurance engagement? Assurance engagement means an engagement in which practitioner expresses what? Conclusion designed to enhance degree of confidence of which user? कौन है अपना intended user? बैंक. Other than हमें A Limited का
कॉन्फिडेंस एनहांस नहीं करना है. दे आर द वन हु आर लुकिंग फॉर द लोन. अबाउट व्हाट? आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट व्हाट? अब अगेंस्ट क्राइटेरिया कितना था? 30%. सब्जेक्ट मैटर कितना है? लेस देन व्हाट? 30%. तो लोन विल बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड? रिजेक्टेड. और वही अगर 35% अबव होता है सब जगह एक्सेप्टेड. अब समझ में आया? सब्जेक्ट मैटर होता है व्हाट वी एक्चुअली परफॉर्म, क्राइटेरिया होता है व्हाट आर अवर स्टैंडर्ड्स. अब जैसे मेरे को ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं व्हाट इज योर क्राइटेरिया ऑफ क्लियरिंग द सी एग्जाम्स, हाउ मेनी मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, हाउ मच मार्क्स ओवरऑल, तो वो क्या हुआ? क्राइटेरिया. वो क्या हो गया? क्राइटेरिया. यू गॉट 35 मार्क्स, पास और फेल्ड? सब्जेक्ट वाइज फेल. यू गॉट 55 मार्क्स, पास और नॉट? तो ये जो 50 और 40 क्या है? ये क्या है? क्राइटेरिया. एंड व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग द मार्क्स इज नोन एज व्हाट? अब समझ में आया? सो व्हेन द एक्चुअल्स आर कंपेयर्ड विद व्हाट? क्राइटेरिया, वी गेट टू नो अबाउट वेरिएंस व्हिच कैन बी पॉजिटिव, व्हिच कैन बी over and above the subject, over and above the criteria is a positive, less than criteria is a negative. अब समझ में आया? These are the very technical words which you need to understand. That's the reason I'm making you understand these words. क्योंकि these are the languages which you need to incorporate in your answer. Now start feeling that you are learning a different kind of dictionary which you have to use in your auditing examination. Are you getting the point? See, let me tell you one thing. Among all your 6 examination, this subject is the only subject which is analytical and implementational in nature. यहां पे आपको accounts के जैसे question नहीं आएगा, law के जैसे simple एक provision नहीं आएगा. Here they will give you a lifetime situation, real life situation where you have to act like a whom? Chartered accountant. कि आपको मान लो assurance engagement का एक lifetime, जैसे we have read one case study yesterday. उसमें 3 friends थे, 4 friends थे, अली ये वो सब. So they gave you the lifetime situation. You have to tell that कि what they are talking about. You have to observe that situation and respond accordingly. अब समझ में आया? तो बताओ 5 differences बताओ between auditing and assurance. Practitioner, intended user कौन अपना? Lender. Responsible party मतलब management. Criteria मतलब standards. And subject matter मतलब actual. Actuals will be compared with what? Standards. अगर ऊपर हो गया तो approved, अगर नीचे हो गया तो disapproved. Is it clear 100%? Up for the next one. It means that practitioner gives an opinion about specific information due to which user of the information are able to make confident decisions, knowing well that the chance of information being incorrect is what? Diminished. इसका मतलब, can you please tell me, are we increasing the confidence of banker or not? तो banker अंदर अंदर क्या सोच रहा है? ये लाइन पढ़ो. Who is user of the information? Who is the user? Banker. Are able to make what? कॉन्फिडेंट डिसीजन. अब बैंकर को कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग क्यों हुआ? वेल दैट चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इज व्हाट? डिमिनिश. किसने वो चांसेस को डिमिनिश कर दिया? प्रैक्टिशनर ने. वही अगर नॉर्मल बोरोअर जाता बैंक के पास कि सर मेरे को ये लोन दे दो एंड माय नेक्स्ट 5 ईयर प्रोजेक्शन आर दिस, बैंकर क्या बोलेगा? टर्न अराउंड पो. करेक्ट है नहीं है? वेदर ही विल बी इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड? डिसइंटरेस्टेड. So what made these two parties come to each other and have a contract? Practitioners. That is what our job is. उसे हम लोग बोलते हैं SAEs, Standards on Assurance Engagements. अब समझ में आया? So every area of auditing profession, assurance profession, related services profession is different area. We are not only limited to doing the statutory audit and tax audit. Generally जब मैं ये सब्जेक्ट डिस्कस करता हूं विद द इंटरमीडिएट स्टूडेंट, यू पीपल आर लुकिंग मोर इंटेलेक्चुअल एज कंपेयर टू द प्रीवियस बैच. मैं अपनी जर्नी बता रहा हूं. 10 years back when I used to ask these things to my students, तो वो बोलते थे ऑडिटर मींस ऑडिट ओनली. व्हाट ओनली? ऑडिट. मतलब हम लोग एक वो इंसान है जो एक ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हैं, बीट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, बीट व्हाट? Statutory audit report. But let me tell you one thing, what they know and what you know, I can see the difference that ki auditing is just a 1% of your profession. Remaining 99% is unexplored. You don't even know that in how many different ways you can make your career. There are hundreds of opportunities available in the market. You just come out as qualified practitioner or qualified CA, you will see that it's an ocean of opportunities. बहुत सारी opportunities है market में. Some people will become specialized in IDT. Some people will become specialized in DT, some in auditing, some in customs, some in all these areas are open for you, right? Now, let's understand the elements of which
एश्योरेंस। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व कौन थी, जल्दी से बताओ। एक था प्रैक्टिशनर, एक था रिस्पॉन्सिबल पार्टी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। रीड द 3 पार्टीज। द 3 पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग होम एंड होम। पहला बंदा कौन है, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इनमें से बोरोअर कौन, इंटेंडेड यूजर या रिस्पॉन्सिबल पार्टी। लेंडर कौन, और उन दोनों को मिलाने वाला कौन। तो हम तो मैट्रिमोनियल के रिश्ते में भी आ गए ना, करेक्ट है नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स above said 3 parties. Practitioner is a person who provides what, assurance. The term practitioner is broader than what, auditor. क्योंकि जब हम लोग वर्ड ऑडिटर यूज करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू डूइंग व्हाट, ऑडिट. प्रैक्टिशनर इंक्लूड्स व्हाट, ऑडिटर. तो व्हिच वन इज अ ब्रॉडर टर्म, स्मॉलर टर्म. Audit is relating to what, historical information, whereas practitioner may provide assurance not necessarily relating to historical. अब इसका मतलब मेरे को बताओ, ध्यान से आंसर देना। मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट स्टार्ट्स व्हेन। तो हम लोग जब ऑडिट करते हैं, डू वी डू द ऑडिट ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? डू वी डू द ऑडिट ऑफ पास्ट एफएस और नॉट? बट व्हेन वी डू प्रैक्टिस, when we do assurance, is it necessary that we are only doing past or past, present and future? तो which one is broader? अब ये लाइन पढ़ना दोबारा से, थर्ड लाइन से, ऑडिट इज रिलेटिंग टू व्हाट, हिस्टोरिक. डू यू एग्री विद दैट? Whereas practice, practitioner may provide assurance, what is this word, not necessarily related to HFI, historical financial information, because we work on both HFI as well as PFI. What is PFI? Projected or prospective financial information. 100% clarity, word to word. Next point, a responsible party is a party who is responsible for preparation of. Now please tell me what is the meaning of these two words. A responsible party is a party which is responsible for the preparation of what? ये क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? मैनेजमेंट. लेकिन उसके ऊपर इंश्योरेंस कौन देगा? ऑडिटर. किसके लिए? इंटेंडेड यूजर के लिए. तो हु प्रिपेयर्स द सब्जेक्ट मैटर, बट हु टेल्स यू द क्राइटेरिया? इंटेंडेड यूजर. तो ऑडिटर इनको कंपेयर करके क्या देता है? विच रिपोर्ट? एश्योरेंस रिपोर्ट. अब समझ में आ रहा है एवरी गेम? नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंडेड यूजर्स आर द पर्सन फॉर whom which report is prepared? Assurance report. 3 persons may use the report in making what? Decision. So tell me the last time, who are the 3 persons? Practitioner, responsible party. With example, are you able to correlate everything? So keep that loan wala example in your head so that we can understand the whole concept. Read the second point. Appropriate subject matter. उसके next भी बढ़ो. तो दोनों में से standard क्या है? Criteria. Standard is what? What is actual? So what will be compared with what? Subject matter, and we will find what? Differences or variances. Am I correct or not? Subject matter कौन prepare करेगा? Criteria कौन offer करेगा? अब जैसे अपना CA clearing examination criteria is offered by whom? I say we give the exam, we give what? Subject matter. The subject matter will be compared with what? Criteria. Accordingly, either will pass or we will simple. 100% clarity. So read the subject matter. It refers to the information to be examined by whom? Practitioner. For example, financial information contained in what? Financial statement while conducting the audit of FS. तो उसे हम लोग बोलते हैं subject matter. Read the next one. This refers to, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? Benchmark. Benchmark का मतलब क्या होता है? Standards. This refers to benchmarks used to evaluate what? Subject matter like standards, guidance, laws, rules and regulation. 100%. अच्छा, मैं तुम्हें एक सिंपल सा आंसर पूछता हूं. मेरे को ये बताओ, there is one very small AGM, you know. AGM stands for annual general meeting. Before AGM, do you have to send a notice? How many days before? ये क्या है? ये क्राइटेरिया है. ये क्या है? I sent within 14 days before the AGM. Is it compliance or is it violation? क्योंकि मिनिमम गैप कितना होना चाहिए?
but I sent minimum gap कितना? Is it violation or not? I sent 30 days before. Am I within the compliance or not? आप समझ में आ गया? तो criteria क्या हुआ? Standard, benchmark, which is set up by the which party? Responsible party or intended user. Subject matter कौन बना रहा है? और उसको evaluate कौन कर रहा है? Practitioner. हमारा काम है एग्जामिन करना. 100% clarity. Okay. Sufficient and appropriate audit evidence. अब ध्यान से सुनना. Obviously, banker will ask me, Rohit, I completely agree with you. You are saying that this key A Limited will be growing in the next 10 years by the rate of 30%. I fully agree with you, but show me the proof. Show me the. मैं हवा में बातें तुम करोगे कि तुम तो कल ये भी बोल दोगे it will grow by 80%. Tomorrow you will say it will go by 200%. But is it present or future? You are talking about what? Future. So I need what? Evidence. Who is asking this from whom? Intended user is asking it from the response practitioner. अब हम लोग अपना evidence को हमेशा SAAE बोलते हैं. What do we call it as? Sufficient and appropriate audit evidence. Repeat the full form. अब ध्यान से सुनना. The word sufficient means quantity wise. What wise? And word appropriate means quality wise. What wise, everyone? अब simple सा example दूंगा. Try to understand. There are 1 lakh sales invoices. How many? He has made 1 lakh sales in a year. 1 lakh not amount. I am saying sales invoices. I verified one. And on the basis of this, I am telling to the bank that everything is true and fair. Only one I verified. Please tell me, quantity wise, my audit evidence is sufficient or insufficient? But will your answer change if I verified 10,000? Correct hai nahi hai? How much I verified now? 10,000 invoices out of what? 1 lakh. Did I pick up randomly or not? Now, where you are looking better? When you are telling to the banker on the basis of 1 invoice or 10,000 invoice? So, where your audit evidence is sufficient? First case or second case? अब समझ में आया? Sufficiency means what? Quantity. What do you mean by sufficiency means? Quantity. What is the second word? Appropriate में मतलब क्या? अब मैं तुम्हें फिर से इसका एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना. When I ask my client कि show me the sales, show me what? Sales. उसने मेरे को दो ऑप्शन दिए. मेरा क्लाइंट मेरे को क्या बोला? सर, this is our user ID and password of our GST portal. Which portal? Where we file our sales returns, GST return. And this is my ledger of sales, which is prepared by the management. These are the two options. Now question is on you. Which one you look quality wise better? Checking the sales by comparing with ledger or checking the sales by comparing with GST returns? Kyun? Which one is internal source? Which one is external source? Ledger is a internal source. GST return is a what can be manipulated, what cannot be manipulated. Ledger can be manipulated. GST returns can be manipulated. What is derived from company's website? What is derived from government website? तो भाई quality wise which one is highly reliable? तो इसका मतलब समझ में आया? The second word appropriate. कभी भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करो, whenever you collect the audit evidence must be sufficient and appropriate. Repeat the two words. Sufficiency means appropriate and means. अब मेरे पास quantity wise good evidence है, quality wise good evidence है. I went to the intended user, now shown it. Now please tell me whether the intended user will believe me or not. Yes. So it means he was expecting evidence or he was expecting SAAE. Stands for sufficient and appropriate. This is how we make him believe that ki boss, whatever I am saying is true and fair. Ardhamainda? 100% word to word. Okay, now let's read. What is written? The practitioner performs an insurance engagement to obtain what? Sufficient, appropriate audit evidence. It is on the basis of evidence only that conclusions are arrived and opinion is found by whom? Auditor. Sufficient relates to what? Quantity, whereas the appropriateness relates to what? Quality. तो हमारे एविडेंस में दो चीजें होनी चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी. One evidence may be providing more comfort to auditor than the what?
अदर एविडेंस। अब मेरे को ये बताओ, ये था सेल्स लेजर, ये था जीएसटी पोर्टल, विच वॉज गिवन मी मोर कंफर्ट, जीएसटी और सेल्स? GST. Now read what is the point again. One evidence may be providing more comfort to the auditor than what other evidence. Next point क्या लिखा हुआ है? The evidence providing more comfort is what? Qualitative, and therefore appropriate. Evidence should be both sufficient and appropriate. बताओ, एक भी वर्ड आपको समझ में आया? ऐसा है कोई भी वर्ड जो समझ में नहीं आया? 100% गोइंग इनसाइड योर हेड। तो हमने अभी तक इसके 4 एलिमेंट्स पढ़ लिए। क्या? कि भैया 3 पार्टीज होती हैं इंश्योरेंस में। व्हाट आर द 3 पार्टीज? एक होता है प्रैक्टिशनर, एक होता है रेस्पॉन्सिबल पार्टी, एक होता है इंटेंडेड। हु इज इवैल्यूएटिंग? हु इज कंक्लूडिंग? प्रैक्टिशनर। फॉर whom? On the behalf of whom? Clarity. Who is preparing subject matter? Who is setting the criteria? Who is matching and evaluating? Third point, 3 points are over. We need to support our conclusion with which evidence? Sufficient and appropriate. Sufficient means quantity wise. Appropriate means which evidence I should choose, which is giving me less comfort or more comfort. वो हमने choose कर लिया. Clarity. 4 elements gone inside your head, and the 5th element. Finally, now banker is asking me a oral assurance or in the written form. तो हम लोग उसको कौन सी रिपोर्ट देंगे? एश्योरेंस रिपोर्ट। नाउ रीड रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन विच फॉर्म? एप्रोप्रिएट फॉर्म। अ रिटन report is provided containing conclusion that conveys the assurance about the which matter? Subject matter. A written assurance report is the outcome of an, तो हमने स्टार्ट कहां कैसे किया? पार्टीज से, एंड कहां पे किया? रिपोर्ट पे। तो बताओ, ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक यू अंडरस्टूड? व्हाट इज ओवरव्यू? 3 पार्टी रिलेशनशिप, appropriate subject matter, suitable criteria, sufficient appropriate audit evidence, and conclusion by giving a which report? आप बताओ, इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? इजी है। अब अपन बात करेंगे कि सर ऑडिट और एश्योरेंस में तो डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ वी वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। ध्यान से सुनना। अब मेरे को ये बताओ, लिस्टेड कंपनीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिस्टेड कंपनीज? Which are either listed under a recognized stock exchange, which can be NSE or 100% correct. ये आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 51. Listed company means a company whose equity shares are listed on recognized stock exchange. तो इंडिया में there are total 29 stock exchange. How many are there? Out of which 2 are what? Recognized. One is NSE, Nifty 50 भी बोलते हैं, and second one is what? BSE, जिसे हम लोग सेंसेक्स भी बोलते हैं। करेक्ट है? अगर आपने इन दोनों में से कहीं पे भी लिस्ट किया है तो बॉस यू आर विच कंपनी? अब क्वेश्चन ये है कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर रूल कंपनी से का नहीं चलता, किसका चलता है? सेबी इज द बॉस। एम आई करेक्ट? फॉर द विच एंटिटीज? सेबी बोलता है कि बॉस यू हैव डन आईपीओ एंड यू हैव डन एफपीओ एंड यू हैव डन ओएफएस। तीनों का फुल फॉर्म बताओ। इसका मतलब हमने कहां से पैसा उठाया? पब्लिक से पैसा उठाया। इज पब्लिक वेटिंग एंड हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस और नॉट? बट लाइक अ अनलिस्टेड कंपनी वी विल नॉट वेट फॉर 1 year. दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव द पब्लिक क्वार्टरली रिजल्ट्स. व्हिच रिजल्ट्स? एंड सेमी एनुअल रिजल्ट्स. व्हिच रिजल्ट्स? दे कांट वेट फॉर AGM आफ्टर 1.5 year. दे कांट वेट फॉर कि वेयर द मनी. दे वांट अर्ली रिजल्ट्स. तो जब हम लोग अर्ली रिजल्ट्स देते हैं, हम उसे ऑडिट नहीं बोलते, हम उसे छोटा भाई ऑफ ऑडिट बोलते हैं, चिन्ना ब्रदर ऑफ ऑडिट. दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिव्यू. रिव्यू इज लाइक अ ऑडिट बट नॉट अ ऑडिट. रिपीट. दोनों में डिफरेंस क्या है? रिव्यू को हम लोग ऑडिट का यंगर ब्रदर बोलते हैं, वेयर वी आर डूइंग लाइक अ ऑडिट बट इट इज नॉट अ व्हाट? Audit. We are not giving the audit report. Audit report will come at the year end only, but we are giving the 4 review reports. But please tell me, is 4 reviews are going to help you in completing your audit effectively, efficiently, and most importantly timely? क्योंकि आपने 4 क्वार्टर्स का रिव्यू ऑलरेडी कर लिया, वो 4 क्वार्टर्स को ऐड करे तो क्या बनता? एक खंबा बनता है। करेक्ट? 4 क्वार्टर्स को ऐड करे तो खंबा बनता है ना?
ओ ये कौन बोला ये यस सर? तेरे को कैसे मालूम है कौन से क्वार्टर की बात कर रहा हूं? कौन बोला ये सर? अम्मा बताना बताना। तू बोला खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, इधर आ। अबे इधर तो आ सर, कम प्लीज। तेरे क्वार्टर निकालता हूं मैं आज। आजा 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 आजा। अब देखते हैं क्वार्टर। आजा 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 आजा। पहले तो हाथ मिला तू। नाम क्या है? कनीश। आगे तू ओनर ऑफ किया है क्या? किया मोटर्स तेरा तो नहीं है ना? अच्छा तो कनीश किया। मैं कौन से क्वार्टर की बात कर रहा था? मैं क्वार्टर की बात कर रहा था अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। माई इंटेंशन वॉज दिस ओनली ना। तेरी क्वार्टर में वो वाले क्वार्टर में। अच्छा ये बताओ बियर बॉटल कैसी होती है पता है? देखो तेरे को कैसे पता कैसी होती है? अच्छा देखा। हाँ, इनका कहने का मतलब है सर, मैं आई वॉज गोइंग ऑन अ रोड, देर वॉज अ रद्दी वाला शॉप एंड रद्दी रद्दी शॉप पे देर वॉज सो मेनी बॉटल्स वर केप्ट एंड आई सॉ इट, तो दैट्स हाउ आई नो दैट इट लुक्स लाइक दिस। पक्का ना? श्योर सर, थैंक यू। किया, हाँ कांजी किया। क्या नाम था? सॉरी कंच, कनीश, किया एंड कनीश। बहुत गलत काम किया तूने, राइट? चलो एनीवे, समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ रिव्यू और ऑडिट में डिफरेंस, विच वन इज ब्रॉडर? अच्छा, एश्योरेंस एंड ऑडिट में ब्रॉडर कौन है? एंड ऑडिट एंड रिव्यू में ब्रॉडर कौन है? विच वन इज यंगर ब्रदर ऑफ व्हाट? डू वी डू इट एनुअली और क्वार्टरली, सेमी एनुअली? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ध्यान से सुनना। अभी ये रिव्यू क्यों किया जाता है? समटाइम्स लिस्टेड कंपनी में सेबी इज वेरी कॉन्शियस। सेबी वांट्स टू नो अबाउट द फ्रॉड्स एंड एरर्स एज अर्ली एज व्हाट पॉसिबल। दैट्स व्हाई लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इट इज मैंडेटरी दैट कि दे हैव टू गेट इट डन। नाउ इन दिस केसेस वी यूज SRE स्टैंडर्ड्स। विच स्टैंडर्ड्स? अब बताओ SA कब यूज करेंगे? ऑडिटिंग में। SAEs कब यूज करेंगे? आप समझ में आ रहा है हर एक स्टैंडर्ड का मीनिंग? SREs when we are going to use, when we are going to do the which engagements? Review engagement. अब पढ़ते हैं what do you mean by review engagement. We have learned that audit is a which engagement? Reasonable assurance engagement. It provides reasonable assurance. However, review is again a what? Limited assurance engagement. What do you mean by limited assurance? More than high or less than high? Less than high. It provides a lower level of assurance as compared to what? Audit. Further, review includes a fewer procedures and gathers a sufficient and appropriate audit evidence on the basis of which limited conclusions can be drawn. However, both audit and review are related to what? Financial statement prepared on the basis of HFI. मतलब अब ध्यान से सुनना, audit versus assurance अगर मेरे को आया क्वेश्चन, तो which one is on HFI, which one is on HFI as well as PFI? This is on HFI, this is on HFI and PFI. लेकिन when we talk about audit versus review, which both are on HFI? Both. Audit also on HFI, review also on HFI. Okay. Where do you get the broader way in these two? यहां पे where do you get the high level of assurance? High level of assurance audit, lower level assurance में. In the audit versus review में भी high level of assurance audit में, lower level of assurance where you are a practitioner, right? Where you are auditor in both the cases, audit as well as review, क्योंकि review is a younger version of what? Audit. समझ में आ गया? तो assurance में you call yourself as practitioner, auditing and review में you may call yourself as auditor, and yes, review में you also may call yourself as practitioner also. There's no hard and fast problem. But review and audit में difference क्या है? We get a less level of assurance in what?
review as compared to what? Audit. 100% clarity. अच्छा, now question arises कि सर ये reviewer and auditor में major difference बताओ. अब ध्यान से सुनना. If you are hiring a yearly reviewer, which reviewer? ध्यान से सुनना. Both the person, the one who did your audit and the one who is doing your, both should be different. Both should be what? Different. If you are hiring a quarterly or semi-annual reviewer, which one? Then in that case, there can be a possibility that कि auditor and reviewer can be what? Same. ये company को ऊपर depend करता है कि are they comfortable with their auditor only to get the review or not. मैं तो बोलता हूँ कि it's better that कि you should hire your same auditor only as a what? Reviewer. क्योंकि see, if both the things will be done by the same person, this is clarity. You will get a clarity because it will also help him in completing the audit on time. After the reviews will be over. But there is one disadvantage also. Tell me one thing. When you will be doing the review as well as what? Audit. You will always be seeing the same things in the same perspective. Are you getting the point? Because there is no one to conflict your opinion. But if the reviewer and auditor will be what? Two different persons. So can I say that two minds are more powerful than one mind? So where you get more clarity. Think from the company's point of view. Where it is more advantageous. When the reviewer and auditor are different or same? Different. Because two minds will see the company in the two different ways. One can give the input to what? Another. 100% clarity. यहाँ तक समझ में आ गया? So what is the major difference between audit and review? Which one is the younger version of what? Can you call yourself as an auditor in review also? Can you call yourself as a practitioner? Which standards we follow when we do review? Generally, what are the areas where we do the review? What are the areas where we do the review? Every company or listed company? Simple. 100% clarity. कोई doubt? पक्का? Okay. वे बंद हो जा मेरे प्रभु. क्लास के बीच में कॉल करते हैं लोग. समझ में नहीं आता उनको. Okay, anyways. यहां तक समझ में आ गया? तो you know the three areas now. Audit, assurance, review. अब पढ़ते हैं अपन next point. Types of assurance engagement, reasonable assurance versus what? Limited. Where is higher? Reasonable. Where it is lower? Limited. So what we are talking about indirectly? We are indirectly talking about audit versus assurance and review. Already discussed, assurance engagements provide assurance to what? Users. The difference is of degree. Reasonable assurance agreements like audit provides reasonable assurance, which is a what? High level. Limited assurance is like a review, which provides what? Lower level. It is only a moderate level. So are you getting the point? The audit is equal to reasonable assurance is equal to high level of assurance. Correct? Review is equal to limited assurance is equal to lower level of assurance. लिख लो कहीं पे. Write it somewhere. Audit is equal to reasonable assurance is equal to high level of assurance. And review is equal to limited assurance is equal to lower level of assurance. Don't worry. Anyways, I will make you write properly. But let us first complete the topics today. Writing we can do it tomorrow also. See, wherever you think that something is not going inside your head, you have every right to raise your hand and ask the doubt immediately. No problem at all. 100%. Post class, pre-class, whenever you feel right, you can come and ask the doubt. Okay. So, ये concept समझ में आया? Is it looking easier now? Audit is equal to reasonable assurance is equal to review is equal to limited assurance is equal to. चलो next point. तो वही अपना next topic है. Difference between what and what, everyone? Reasonable assurance engagement versus. So point number one पढ़ो left side का. Reasonable assurance means what? High level. Whereas a limited assurance provides what? Low level. ये तो बहुत ही चिल्लर डिफरेंस था. ये तो अपने को पता है. Second पढ़ो. Audit में we do elaborate and extensive procedures to obtain sufficient and appropriate. So where we use more techniques? Audit. More procedures, more detailed audit. Opposite to that, less procedures, less techniques, less detailed is what? Review. So read, it performs more procedure, fewer as compared to what? Reasonable assurance.
तो आई विल मेक यू राइट इन अ प्रॉपर मैनर, डोंट वरी. फर्स्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग बोथ द डिफरेंसेस? तो पहला डिफरेंस है लेवल ऑफ एश्योरेंस का, एंड सेकंड डिफरेंस इज what do we do? Where we do more procedures, where we do fewer. Next one, it draws which conclusion? On the basis of it involves obtaining so as to draw what? Actually देखा जाए तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 में कोई डिफरेंस नहीं है. ये बोल रहे हैं सॉरी सॉरी, दोनों में सॉरी बोल रहे हैं. दे आर जस्ट एक्सटेंडिंग अननेसेसरली. तो प्लीज टेल मी, पॉइंट नंबर 1 में हाई लेवल, लोअर लेवल, मोर प्रोसीजर, लेस प्रोसीजर. हियर रीजनेबल एश्योरेंस, हियर लिमिटेड एश्योरेंस. तीनों डिफरेंस समझ में आए? फोर्थ वन प्लीज. हो एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस हमें तो पता ही नहीं था. इट्स अ विच एंगेजमेंट. और तुम्हें ये भी नहीं पता कि लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या? नहीं पता तुम्हें. इट इज विच एंगेजमेंट. बताओ, ये भी कोई डिफरेंस है? Next point. Besides reasonable assurance and limited assurance engagement, there is another kind of insurance with related to matters other than historical. Such assurance may be called as prospective financial information. हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? Review engagement या assurance engagement की? याद है PFI? What is PFI? Prospective. What do you mean by prospective? Present or future? Future. And not to what? Historical. It may relate to providing assurance on which controls? Internal. Prospective financial information means an information which is based on, what is the first word? अच्छा, 2025 में what will be the profits of Reliance Industries Limited is present situation or future? तो आप assume ही करोगे ना कि assuming that looking at present performance, assuming that 2025 Reliance में get 12 lakh crores of profit. Am I correct or not? Like that only you will say. So PFIs are based on present or are based on assumptions. Assumptions about what? Events that have occurred or may occur in when, and possible actions by an entity. Why the word possible action is being used? Sir, एक word आपको समझना पड़ेगा. Why they chose to write the word may? Why they chose to write the word assumption? Why they chose to write the word called possible? सारे सेंटेंसेस को मर्ज करके बताओ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पीएफआई की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? पीएफआई इज प्रेजेंट बेस्ड और फ्यूचर बेस्ड. तो ये सारे वर्ड फ्यूचर के रिलेटेड है. अब दोबारा से पढ़ो. इट मींस एन इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumption. टिक मार्क नंबर 1. सेकंड, इवेंट्स अकर और मे अकर व्हेन, एंड इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स. हो सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शंस बाय व्हाट? एंटिटी. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? Forecast, or it can be in the form of or what? अब सबसे बड़ा यहां पे जो अपना डिस्कशन है, these two words. What are the last two words? कोई बताएगा ग्रामेटिकल मीनिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ग्रामेटिकली सेम है. Forecast is also about future, projection is also about future, but in auditing these two words are very different from each other. ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं. जो forecast होता है, when we make the forecast is based upon best estimates. It is based upon, ध्यान, मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, understand first. Forecast is based upon best estimates, whereas projections are based upon unexpected or unrealistic estimates. Which estimates? Unexpected or unrealistic. अब ध्यान से सुनना, जो तुम्हें बताओ, automatically you will understand कि am I talking about forecast or am I talking about unrealistic one. ध्यान से सुनना. Reliance Industries Limited का आज का प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल 7,000 करोड़ है. कितना? They are saying that कि 2025 means 2 years from now we are expected to earn 8,500 crores. अब ये मेरे को ये बताओ, ये आपको रियलिस्टिक लग रहा है ना कि 2 साल में चलो 7,000 से दे में इंक्रीज व्हाट? बट अगर रिलायंस बोलती है कि आज मेरा प्रॉफिट है 7,000 करोड़, 2020 में वी आर एक्सपेक्टेड टू अर्न 70,000 करोड़ इन द नेक्स्ट व्हाट? 2 years. मैं ये नहीं बोल रहा कि इट इज अनअचीवेबल, बट राइट नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस यू फाउंड in both the examples.
Which one is looking forecast to you? Which one is looking projection to you? First one is a forecast. Is it a best estimate or not? Okay, it's like simple. This year my earning is 1 crore. Next year I may increase to 1 crore 20 lakhs. I can say like that. But this year my earning is 1 crore. Next year I am expecting 100 crores. ये तो बहुत ही under. Which one is looking organic? First one. Which one is looking inorganic? But I'm not denying the fact that the second one is not achievable. I'm saying that second one is looking unexpected and what? Unrealistic. तो जब हम लोग forecast की बात करते हैं तो वो थोड़े best estimates होते हैं. When we talk about projections, they are best estimates or unrealistic one. That is a major difference between these two words. What are the two words? Now I want all of you to read the PFI again. Read the definition of PFI. Let me just and tell me one thing. What should I underline so that you can tell me कि what how it is different from HFI? बताओ PFI क्या है? Prospective financial information is what? That financial information which is point number one based on point number one about events that occur or may occur on what? Present or future and what? Possible actions by an entity. Either it can take the shape of or it can take the shape of or combination of both. 100% clarity. कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट पढ़ो. It is to be noted that in such type of assurance engagement, examination is not of what? Historical. Because we are doing the examination of PFI or HFI? PFI. Here it is important to note the difference between HFI and PFI. The former means the first one relates to information expressed in financial terms of an entity about their which events, economic events, conditions and circumstances which have already what? Occurred in the which period? Past period. हम लोग HFI में past information देते हैं. Whereas the latter, the PFI, relates to information which is based on assumption about the occurrence of which events? Future events, possible actions by the entity. Therefore, HFI is rooted in past events which about the events which have already occurred. PFI is related to what? Future event. I think what is the conclusion moral of the story in the whole page? You will found the difference. So tell me, what are the three differences between HFI and PFI? It is on past events, future event. Already occurred, may occur. It is based upon events and considerations happened. It is based on assumptions which can take the shape of forecast or projection. Which one is best estimate? Which one looks unrealistic? Did you get the clarity? 100% word to word. Read the next one. In assurance reports, which reports? Again repeating, which reports? Where you are having three parties. जैसे ये वर्ड आएगा ये सारे 5 पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में सराउंड हो जाने चाहिए. What are the 5 parties? 3 parties. Responsible party, intended user, practitioner. Am I correct? What do you mean by criteria, standards? What do you mean by subject information? Information provided by responsible party. आपको क्या कलेक्ट करना है? Sufficient and appropriate audit evidence. आपको क्या रिपोर्ट देनी है? ओरल और रिटर्न. तो जैसे ये वर्ड आएगा आपके दिमाग में 5 वर्ड सराउंड होने चाहिए. तो इन केस ऑफ विच रिपोर्ट्स? एश्योरेंस रिपोर्ट विच इन्वॉल्विंग PFI. व्हाट इज द वर्ड यूज्ड? प्रैक्टिशनर. ऑब्टेन व्हाट? टू द इफेक्ट दैट. यहां पे इन्होंने क्या वर्ड लिखा है? मैनेजमेंट. हम लोग क्या बोलेंगे? Responsible parties assumptions on which PFI is based are not looking unreasonable. Prospective financial statement is properly prepared on the basis of what? Assumptions. It is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed. It relates to which events? Future events. While evidence may be available to support the assumptions on which the PFI is based, such evidence itself is what? Which oriented? देखो sir, bad debt happened. What does that mean? Bad debt happened. Is it past or not? Do I have an evidence? If she was my debtor of 50 lakhs, she is saying that I will not pay the money. Now tell me, bad debt or no bad debt? Bad debt may happen. अब बताओ, which one is present oriented, which one is future oriented? तो PFI में कौन से evidence होंगे? Which occurred or which are future oriented? वही वो बोल रहा है. क्या बोल रहा है? कि we also need evidence in PFI,
बट पीएफआई एविडेंस, सच एविडेंस, यहां से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सच एविडेंस इज इटसेल्फ जनरेटेड विच ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड. क्लैरिटी. Next point, the auditor is therefore not in a position to express an opinion whether the result shown in PFI will be achieved. क्यों हम लोग assurance नहीं दे पा रहे? Why we are not giving high level of assurance? It may happen, may not happen. What if day after tomorrow year lockdown will happen? Whether all the PFIs will go zero or not? Yes. The future is certain or uncertain. That's why we give high level of assurance or low level. Everything is connected. Try to understand. Next point. Therefore, in such assurance engagement, practitioner provides a report assuring that nothing has come toward. अच्छा, अब जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देते ना, उसकी लैंग्वेज पता क्या है? According to the information and explanation given to me and as per my evaluation, I can say that कि financial statements are giving true and fair view. Are you seeing the level of confidence? But यहां पे वो wording क्या यूज करा? पढ़ो क्या लिखा? In such assurance engagement, practitioner provides a report. यहां से पढ़ो inverted comma से, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? Assuring that nothing has come to the practitioner's attention to suggest that कि these assumptions do not provide reasonable basis for projection. मैं बैंक वाले से बात कर रहा हूं, सर, I have done the assurance of their PFI. Nothing has come to my attention due to which I will say that कि their assumptions are wrong. अब मेरे को बताओ, आपको कॉन्फिडेंस लेवल वेयर डिड यू टेक हायर व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग लैंग्वेज और एश्योरेंस लैंग्वेज? ऑडिटिंग लैंग्वेज. I can say that HFI is true and fair. I can say that. It means confidence level was there, but now you have confidence or no confidence? क्योंकि it is based on what? Assumptions, which may happen. Hence, such type of assurance provides only a what? Moderate. अब मैं तुम्हें बताता हूं सर, रिव्यू और एश्योरेंस को कैसे अलग करना है. अब देखो, ए वर्सेस आर. अपना पहला ए कौन है? ऑडिट वर्सेस. अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना. रीजनेबल एश्योरेंस, विच एश्योरेंस? मॉडरेट एश्योरेंस, विच वन? लिमिटेड एश्योरेंस. सबसे लीस्ट कहां पे है? समझ में आ रहा है? 100% क्लैरिटी. तो अगर एग्जाम में आ गया कि हाउ डू यू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन दीज 3 इवेंट सेपरेटली, तो आप क्या लिखोगे? रीजनेबल वर्सेस मॉडरेट वर्सेस. रीजनेबल कहां पे? ऑडिट में. मॉडरेट कहां पे? और लिमिटेड कहां पे? तो एग्जांपल्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स. नाउ मेरे को बताओ, अपन एफएस का ऑडिट कर रहे हैं. एफएस का ऑडिट, एफएस मींस व्हाट? एचएफआई और पीएफआई. HFI. तो बताओ, ऑडिट हुआ है, एश्योरेंस हुआ? विच एंगेजमेंट? रीजनेबल एश्योरेंस और मॉडरेट इंश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस. इज इट लेकिन रीजनेबल? ओके, नेक्स्ट पढ़ो. रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल से. अब बताओ, रिव्यू कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, एश्योरेंस कर रहे हैं? रिव्यू मतलब मॉडरेट एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस. आगे वर्ड. नेक्स्ट पढ़ो. Which assurance? Moderate, क्योंकि it is based on assumption which are can be forecast or which can be what? Projection. Which one is realistic? Forecast. I'm not saying that it is 100% realistic, but they are achievable. Which one is looking unrealistic? And last one, reports on controls of operating. ये भी कौन सा है? Assurance engagement. तो ये हो गया limited, ये हो गया limited, ये हो गया moderate. The third and the fourth are which one, everyone? Moderate assurance, and this one is also what? Moderate assurance. अब समझ में आया? So what is the basic differences between the three? You should have known. You already know now कि how audit is different from assurance is different from review. Which one? Which two are on HFI? Audit and which is on PFI? अब मेरे ख्याल से whenever you will hear this word, the things will start running inside your head. कहां पे लिमिटेड एश्योरेंस? कहां पे रीजनेबल? कहां पे मॉडरेट? कहां पे assumptions यूज होती है? कहां पे हम लोग क्वार्टरली एफआई चेक करते हैं? कहां पे फुल ईयर का? कहां पे हाई लेवल है? कहां पे दोनों पे लो लेवल है? Moderate is also low and limited is also low. Where do you call yourself as a practitioner? Where you can call yourself as an auditor? खत्म होगी बात.
अगर आपको कोई भी डिफरेंस आता, नाउ आई डोंट थिंक सो दैट कि एनीबडी कैन एस्केप यू फ्रॉम गेटिंग द मार्क्स. You yourself can't fail you guys if this kind of topic will come. That much of clarity I hope I have put it inside your head. समझ में आ गया तीनों का? नेक्स्ट ये हो गया अपना कंक्लूजन ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. अब पढ़ो मॉरल ऑफ द स्टोरी. ऑल आर नोन एज ऐश्वर्य, उसमें से सम आर व्हाट रीजनेबल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड वन आर नोन एज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमेनिंग आर नोन एज व्हाट ऐश्वर्य सिंह. एक बच गया आर एस, जिसमें हम लोग एस आर एस फॉलो करते हैं. व्हाट इज एस आर एस? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. दे आर नॉट एट ऑल एश्योरेंस एंगेजमेंट्स. हम लोग इनको पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स. व्हाट डू वी कॉल इट एज? अच्छा मेरे को ये बताओ, in all the three what we have done, what are the three we have done? Audit, assurance and review. Did you prepare FI or management? You are only doing what? Examination. But in this SRS mein, we help the management in preparing what? Financial information. इसका मतलब we are now the puppets of whom? Management. इसलिए इसको लास्ट में रखा गया. They are known as which engagements? Compilation engagements. What do they know? Compile. अब let's say for example, Reliance Industries Limited के accounts department में उनका CA resign दे दिया. उन्होंने मेरे को hire कर लिया कि रोहित, we don't want you to be our auditor, assurer or reviewer. We want you to be our related service provider. Which one? Please help us in preparing our what? Financial. हमारा trading account, P&L, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts, statement of changes in equity, prepare it. Now, am I examining it or preparing it? It means I can't do any of those three things now if I'm already a what? Compiler. Because it will be like you are setting your own exam. Will it be a self-review threat? Who prepared this FS? I. So will I be appointed as an auditor or will not be? Because I cannot review my own thing. Are you getting the point? समझ में आया? तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट और दूसरे एंगेजमेंट में डिफरेंस क्या है? वेयर यू आर प्रिपेयरिंग एफएस, वेयर यू आर प्रिपेयरिंग एफएस, कंपाइलेशन. वेयर यू आर एग्जामिनिंग एफएस, एग्जामिनेशन आर ऑफ थ्री टाइप्स: ऑडिटिंग, एश्योरेंस, रिव्यू. कंपाइलेशन इज ओनली वन टाइप, एसआरएस. व्हाट डू यू कॉल इट एज? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सब. क्लैरिटी आ गई? तो चारों समझ में आ गया. अभी चारों का पर्पस क्या है? ठीक है. और यहां पे हमारी कोई, सुनो, यहां पे कोई ओपिनियन ही नहीं है. नो वर्ड ओपिनियन यू विल राइट एंड नो वर्ड वर्ड कंक्लूजन यू विल राइट. नो assumptions ऑल्सो, नथिंग इज देयर. क्योंकि वी आर नॉट एग्जामिनिंग एनीथिंग, वी आर ओनली वर्ड प्रिपेयरिंग एवरीथिंग. आप समझ में आ गया? इट मीन्स यू आर बिहेविंग लाइक एन ऑडिटर और अकाउंटेंट. अकाउंटेंट सिंपल वर्ड्स में. तो जब आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो अपने क्लाइंट को, तो आप एसआरएस फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस. Anybody in the class having a doubt? पक्का क्लैरिटी है सर? एट द एंड ऑल्सो, अम्मा एंड में श्योर, expecting you to come to me in case you get any doubt. Now please tell me the answer for this question. Read it everyone. Management of Exotic Tours and Travel Limited requested its what? Auditor Raja and Co Associates to provide a what? To provide a which report? दोबारा से बोलना कौन सी? तो पांच चीजें क्या दिमाग में आ रही हैं? तीन पार्टीज है, सब्जेक्ट मैटर भी होगा, क्राइटेरिया भी होगा, रिटर्न रिपोर्ट भी होगी और SAAE भी होगा. और कौन सी एश्योरेंस होगी इसमें? रीजनेबल, मॉडरेट या लिमिटेड? आंसर तो तुम्हारा यहीं पे खत्म हो गया. तो दे हाइड यू फॉर गिविंग यू विच रिपोर्ट, बट ऑन व्हाट? अब समझ में आया मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं? दिस इज व्हाट द मिस्टेक यू विल डू इन योर एग्जामिनेशन. आप जैसे इंश्योरेंस रिपोर्ट पढ़ोगे ना, फट 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 स्टार्ट राइटिंग. और ये तो SAE का क्वेश्चन है. उन्होंने किसके लिए अपॉइंट किया तुम्हें? एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन व्हाट? PFI और FI. मतलब ये क्या हो गया? या तो ऑडिटिंग है या रिव्यू है. ऑफ व्हाट? अभी तक भी हमें पता नहीं है कि ऑडिटिंग, एश्योरेंस तो आउट ऑफ द बॉक्स चला गया. अभी बचा कौन? ऑडिटिंग एंड रिव्यू. ऑफ व्हाट? ओहो, नाउ इट इज अ व्हाट? आप समझ में आया क्वेश्चन को फिल्टर कैसे करते हैं?
जैसे ही देखा एश्योरेंस वर्ल्ड, दिल बोला यार मस्त ऐसे ही हो रहा है। जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने बोल दिया FI, शिट PFI नहीं है, तो इसका मतलब बचा क्या, ऑडिट एंड रिव्यू। आगे थोड़ा और बढ़े, उन्होंने क्या बोल दिया, क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब, तो अल्टीमेट कंक्लूजन आपको किस लिए हायर किया गया, SAE करने के लिए या SRE। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैन राजा एंड को प्रोवाइड सच अ रिपोर्ट। यस, रिव्यू की भी रिपोर्ट होती है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सच रिपोर्ट, इज इट अ ऑडिट रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट। What would be necessary for them to obtain sufficient and appropriate audit evidences in this case? High level of procedures or limited procedures? So many tools and techniques or limited work? क्योंकि boss, you are not giving a reasonable assurance, you are giving a limited assurance. Simple सा answer है। So until unless you don't know the difference in all these areas, you won't be able to answer these kind of। और मैं तुम्हें गारंटी चीज वाली एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ICA में May 24 is going to be the first examination. Am I correct? These are the recently added topics in your chapter. अब definitely ICA does not have the backup from where they can ask you the question. तो 100% it is a guarantee that what you are seeing in your which material, ICA material, are most probably the same questions you may see in your what, examination. तो advantage is that कि कुछ भी हो जाए, no author's book, nothing is required. We only need whose book, ICA। मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा किसी भी फैकल्टी ने आपको फोकस नहीं करवाया होगा ICA की बुक पे। भाई करना ही पड़ेगा। तो वोंट बिलीव, इन आवर केस व्हेन वी वर योर स्टेज ना, व्हेन वी वर एट योर स्टेज, हमारे टाइम पे ICA का मटेरियल इतना वेस्ट होता था। वो ऐसे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स, नो अंडरलाइनिंग। यहां पे तो आपको कलरिंग दिख रही है ना, हमारा होता था ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। हाँ, अरे ब्लैक, तुम तो प्रिंट निकालोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा ना मां। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, थोड़ा सा देखने में लुक्रेटिव तो लगता है। एटलीस्ट उन्होंने दे टुक एन एफर्ट टू पुट द थिंग्स इनटू हेडिंग्स। हेडिंग्स को उन्होंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है और बोल्ड किया है। एटलीस्ट यू विल गेट सम इंटरेस्ट। हमारे टाइम पे बस चैप्टर नंबर 1 नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट, बस 30 पेजेस के बाद चैप्टर खत्म। यही नहीं पता स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है। समझ में आ रहा है? यू पीपल आर स्टिल लकी कि ICA इज पुटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट। हमारे टाइम पे होता तो मैं खैर तब भी 2012 में ही CA बनता मैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं था ICA में। देन वी वर दैट जनरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु वर लुकिंग फॉर ऑथर्स बुक। नाउ रीजन नंबर 2 व्हाई यू शुड नॉट बाई ऑथर्स बुक। प्रॉब्लम आपकी क्या है, आप टेलीग्राम चैनल्स ऐड करते हो अपने। You subscribe to Telegram channels of the big popular faculty. I know I'm popular, but other popular faculties. सुनो तो सही। अब आप पता क्या करोगे, अब वो जैसे तुम्हें सुपर 50 क्वेश्चंस, सुपर 30 क्वेश्चंस, चार्ट बुक, समरी बुक, you will start buying those things. But let me tell you one thing, he is a bloody businessman. He's selling his books. He will compromise with the language, make it too simplified for you so that you will start reading it and start feeling comfortable. But if the same language you will deliver it in what? Examination. You will get how many marks? 0 marks. Problem क्या है? You are digging your own grave by running behind these groups and everything. यहां से चार्ट बुक मिल गई, यहां पे सुपर 50। मेरे को ये बताओ, someone who is saying that कि बॉस, I will tell you near the examination when the March month, April month will come ना, तुम YouTube खोल के देखना, hundreds of chartered accountants will come on that platform and will deal you the marathons, revisions. It's good, but giving you super 50, super 30, best questions, important question, they are giving you wrong direction. Are they the one who set the examination paper? Then who the hell are they to let you know that कि these 50 will only come? जिसको आपने लाइफ में कभी मिला नहीं है, you didn't meet him, you didn't talk to him, you just saw one video which looked good and you started believing him. And you know what will happen? If the examination paper will go against it, they will come to the platform. I was so already saying. आप समझ में आ रहा है? You didn't read the disclaimer below. These are not the only 50 questions you have to do. फिर वो disclaimer add कर देंगे and they will come on the public platform and say sorry. Are you getting the point? अब आप वो सॉरी का अचार डालोगे when you will get failed. Are you getting the point? तो prevention is better than be reactive person or proactive. Proactive.
हमारे सामने आईसीए ने मटेरियल दिया है, एग्जामिनेशन पेपर कौन बनाएगा? आईसीए। एमसीए की बुकलेट कौन दे रहा है तुम्हें? आईसीए। ये क्वेश्चंस कौन फ्रेम कर रहा है? तो बस फिर वही करना है अपने को, और कुछ करना ही नहीं है। क्लैरिटी 100%। स्टार्ट राइटिंग, जल्दी लिखो। आज मैं थोड़े 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, क्योंकि आई केम लेट, सॉरी। हाँ, तुम्हारा लंच को थोड़ा, ओनली 5 मिनट्स। व्हेन इज योर अनदर क्लास? 2:15 ना? हाँ तो अभी, हाँ 2 बेटा, अभी तो मेरी 9 मिनट्स पड़े हैं, अभी तो 1:06 हुए हैं। स्टार्ट राइटिंग, पुट द हेडिंग। व्हाट इज द लास्ट टॉपिक वी रोट? जल्दी बताओ। हाँ, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट वी हैव टू राइट, राइट। वी रोट इट और वी डिडंट राइट इट? Meaning of assurance engagement we wrote. Meaning of engagement we wrote. Okay, start writing everyone. Meaning of assurance engagement and how it is different from audit engagement. Put the heading. Meaning of assurance engagement and how it is different from audit engagement. Meaning of assurance engagement and how it is different from audit engagement. I will combine these both answers together and will give you the perfect answer. Okay. Now, point number 1. Put the subheading meaning. Put the subheading meaning. Under the meaning, A point. Under the meaning, A point. It is an engagement. It is an engagement where practitioner expresses a conclusion. It is an engagement where practitioner expresses a conclusion. Underline these two words. What are the two words you have to underline? Practitioner and conclusion. It is an engagement where the practitioner expresses a conclusion. Point number 2. To increase the confidence of intended user. To increase, point number B is to increase the confidence of, correct है? To increase the confidence of intended user. Bracket में छोटा सा banker लिख लो, just so that you can connect it with the example. To increase the confidence of intended user. Who is other than responsible party? Continue. Who is other than responsible party? Intended user who is other than responsible party. अब बताओ responsible party कौन है? Management. उसके ब्रैकेट में लिख लो management. Right? ये हो गए अपने 2 points. अब ये दोनों points को merge करो, क्या हुआ? It is an engagement where a practitioner gives a conclusion to increase confidence of intended user who is other than C point. Third point. By evaluating the subject matter, by evaluating the subject matter against criteria. Correct है? By evaluating subject matter against criteria. अब बताओ subject matter क्या? Actual. Against what? Criteria का standards. लिख लो ब्रैकेट में. Actuals against standards. 100% clarity. ठीक है? Now, point number 2. 1 is meaning. Meaning under 3 points you have written. Now put the point number 2. Elements. What are the 5 elements? Please tell me. 3 parties. Subject matter. Criteria. Obtaining SAAE. And giving a written report. Now put the heading elements. Under the elements, A. What is the point number A? There are 3 parties involved. A point. There are 3 parties involved. There are 3 parties involved. Under that first one, who is the first party? Practitioner. The one who evaluates. Put the heading practitioner hyphen the one who evaluates. B. Responsible party. Responsible party hyphen
The one who prepares FI. What is FI? Financial information. The one who prepares FI, ब्रैकेट में लिख लो सब्जेक्ट मैटर, करेक्ट है? The one who prepares FI in the bracket, right? Subject matter. Who is our third party? Intended user. Intended user. The one who is going to use assurance report. The one who is going to use assurance report. The one who is going to use assurance report. ब्रैकेट में लिख लो sets criteria. Sets criterias. Correct? Three parties involved. What is the first party? Who evaluates. Second party? Who prepares. Third party? Who uses assurance report. Bracket में sets what? Criteria. Element number 1. Element number 2. Subject matter. Put the heading subject matter hyphen. FI provided by the responsible party. FI provided by responsible party. FI provided by responsible party. Clear? Okay. Third, criteria. Standards or benchmarks. Standards or benchmarks. Standards or benchmarks against which subject matter will be evaluated. Standards or benchmarks against which subject matters will be evaluated. Correct? Against which. अब आपको ये वर्ड एलियन नहीं लगने चाहिए. फ्यूचर में कभी भी ये वर्ड यूज होंगे, इट मीन्स यू नो द मीनिंग. एम आई करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट. फोर्थ वन. Sufficient and appropriate audit evidence. Fourth one is sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient and appropriate audit evidence. Hyphen. To support his conclusion. Hyphen, right? To support his conclusion, practitioner needs to obtain. Practitioner needs to obtain audit evidences. Practitioner needs to obtain audit evidences which should be sufficient. Practitioner needs to obtain audit evidences which needs to be sufficient. Bracket में लिख लो quantity wise, which needs to be sufficient. Bracket में लिख लो quantity wise and appropriate. Bracket में लिख लो quality wise. Correct है? Which needs to be sufficient quantity wise and appropriate quality wise. And what is the fifth one, sorry? Written assurance report. Written assurance report. Hyphen, it contains the conclusion. It contains the conclusion on subject matter. It contains the conclusions on subject matter in the form of which assurance? Assurance की बात चल रही है. ये ऐसे ही वाला in the form of moderate assurance. In the form of moderate assurance. It includes the conclusions on subject matter in the form of moderate assurance. Bracket में क्या लिखोगे? High level or lower level? Lower level assurance. Lower level assurance. 100%. Noted. अभी कोई डाउट है? I hope now you can see and read the
इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन. समझ में आया? अभी तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा इसे का मटेरियल? पक्का? ठीक है, चलो सी यू गाइस टुमारो. कल अपन मिलेंगे. रिमेनिंग विल राइट एंड we'll see what is the next topic we have to. I think review is a qualities, so we have done now. I made you write between personal and we'll see next topic. See you guys tomorrow. Thank you.